हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूं संगति एंड मैं हूं आप सबकी साइंस टीचर। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो ग्रेट इन योर लाइफ। ओके, तो लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड अबाउट द वेरिएशन and the introduction to the sexual reproduction. Today we are going to discuss about the male and female reproductive system. Okay, so please do watch the complete video, okay, and hit the like button also. So let's start our today's class. Today we are going to first discuss about the male reproductive system, which looks like this. Okay, तो male reproductive system का main part क्या है? Testes. Testes is the primary reproductive organ in male. Okay, testes is producing the male sex hormone, that is the testosterone. Okay, testosterone is further responsible for the development of secondary sexual characteristics in male. ओके एंड इसका दूसरा फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ऑलराइट, सो टेस्टिस के दो फंक्शन हो गए, प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोडक्शन ऑफ द sperms. Okay, now this testis is present inside a pouch like cavity that is called as the scrotum. Now this is present outside the body. Question can come, why it is present outside the body? So because the production of the sperm, that is the spermatogenesis process, requires 2 to 3 degrees Celsius lower than the body temperature. That's why it is present outside the body. Okay. Now, after the production of the sperm is temporarily stored in the epididymis for approx 20 to 25 days. ओके, टेम्पररीली स्टोर्ड होता है ये, और उसके बाद ये मूव करता है, ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि है वास्ट डिफरेंस, यहाँ से मूव करता हुआ जाता है, फिर ये यहाँ पे पहुंचता है। यहाँ पे पहुंचने के बाद देयर आर फ्यू ग्लैंड्स, these are called as the seminal vesicle, prostate gland, and another gland is there, that is the bulbourethral gland. Okay, these glands are secreting some fluids that is called as the seminal fluid. जैसे सेमिनल वेसाइकल सिक्रीट कर रहा है सेमिनल फ्लूइड। अब इसका फंक्शन क्या है इन फ्लूइड्स का? दीज फ्लूइड्स आर प्रोवाइडिंग मोटिलिटी एंड नरिशमेंट टू द स्पर्म। ठीक है, तो मोटिलिटी और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड क्या बन जाते हैं? टुगेदर नाउ वी कॉल इट एज अ सीमेन। इसको अब हम क्या बोलेंगे? सीमेन बोलेंगे। So there is another small little duct that is called as the ejaculatory duct, which is ejecting out the semen with force. ठीक है, और फिर ये eject out होके यहाँ से आता है, which is the urethra, again a long tubular structure, urethra. यहाँ से ये बाहर निकल जाता है out of the body. Okay, urethra is the common passage for semen and urine both. Okay, urethra is covered by another muscular structure. This is the penis. All right. So penis is both the reproductive organ as well as the excretory organ in male. I hope it is clear to all of you. So this is about the male reproductive system. एक बार female reproductive system को देख लेते हैं. So female reproductive system looks like this. Okay. Now female also has one pair of ovaries, and ovary is the primary sex organ in female, or primary, you can say primary reproductive organ in female. Okay, ovary is also producing the female sex hormones, which is the estrogen and progesterone. All right, estrogen and progesterone, these both the hormones are produced by ovary. Okay, ovary is producing ovary is producing the egg, which is called as ovum. ठीक है, क्या होता है ये? ओवम। ये देखो, ये छोटा सा एक मैंने बना दिया। ठीक है, अब दो ओवरी है, दो ओवरी दोनों दो ओवम तो नहीं बनाते, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली बनाते हैं। सो ऑल्टरनेटिवली, फॉर एग्जांपल, अगर इस महीने में लेफ्ट ओवरी ने ओवम प्रोड्यूस किया तो नेक्स्ट मंथ राइट ओवरी ओवम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो पॉइंट टू बी नोटेड दैट व्हेन अ फीमेल इज taking birth, she already has a lot of immature eggs in the ovary. ठीक है, जब एक फीमेल पैदा होती है बहुत सारे immature eggs होते हैं already. But when she hit the puberty, those immature eggs start to mature. All right, and then that is we call it as a maturation or production of the ovum.
All right. So the process of production of the ovum is called as oogenesis. क्या बोलते हैं इसको? oogenesis बोलते हैं. ठीक है. ये ओवरी है और ये है what these finger like projections are called as the fimbriae. You can see over here, these are the fimbriae. Okay, and this is the fallopian tube. Again, here is also another fallopian tube. One pair of fallopian tube are there. This is also called as oviduct. यहाँ पे है uterus. Uterus is also called as womb. ठीक है, बच्चेदानी, womb. ठीक है, this is the cervix and here is the vagina. ठीक है. Now after the process of oogenesis, मतलब after the process of production of the ovum, ovary release the ovum. Ovary क्या करता है? ovum को release कर देता है. तो ovum किधर आ गया? यहाँ पे आ गया, fimbriae में. Fimbria are the finger like projections which are catching the ovum. जैसे हम ball catch करते हैं ना, तो ये भी ovum को catch कर लेता है. Okay, and the release of ovum is called as ovulation. All right, the release of ovum from the ovary, that is called as ovulation. तो यहाँ पे कौन सा process हो रहा है? Ovulation process हो रहा है. Now next ovum is going to move from here. अब ये कहाँ पे आ गया? Fallopian tube में आ गया. ठीक है. Now it remains in the fallopian tube for like 24 hours. Okay, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रहेगा. Now during the process of insemination, sperms, millions of sperms enter through the vagina. बहुत सारे sperms enter करते हैं vagina से. All right. Now it is the sperms are moving through the vagina, through the cervix, और ये यहाँ से move करते हुए कहाँ तक आ जाते हैं? Fallopian tube तक आ जाते हैं. Okay, and in the fallopian tube, the process of fertilization takes place. The process of fertilization takes place in the fallopian tube. Okay, now let's see what is the process of fertilization. So in the process of fertilization, the sperm and the ovum, they are fusing together to produce the zygote. Sperm is having 23 number of chromosome. ठीक है, 23 number of chromosomes में 22 pairs will be the 22 will be the autosomes, not pairs, sorry. 22 will be the autosomes and one pair will be the sex chromosome. It can be either X or Y. ठीक है, कोई सा भी हो सकता है. And there is always 50% chance, okay, of having the X chromosome and having the Y chromosome. Ovum is also having the sex chromosome which is going to be X only. इसके पास सिर्फ X ही होता है. Okay, now after the process of fusion of this sperm and ovum is called as the fertilization. I hope it is clear. और उसके बाद क्या बनता है? जाइगोट. तो जाइगोट में क्वेश्चन आ सकता है, जाइगोट में कितने सेल्स होते हैं? हाउ मेनी सेल्स आर देयर? 1 plus 1 is equals to 2. But no, here 1 plus 1 is equals to 1. तो जाइगोट में होते हैं 1 सेल. ओके, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है. ऑल राइट, दो चीजें फ्यूज हो रही है, तो जाइगोट इज हैविंग 1 सेल ओनली. ऑल राइट, तो यहाँ पे हो गया क्या? फर्टिलाइजेशन हो गया और क्या बन गया? यहाँ पे जाइगोट बन गया. ठीक है. नाउ दिस 1 सेल, दिस जाइगोट कीप्स ऑन डिवाइडिंग इटसेल्फ. अब ये खुद को डिवाइड करेगा. ठीक है, तो 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, फिर 8 से 16, 16 से 32, राइट, 16 to 32, ऐसे करके डिवाइड करता रहेगा. एंड जैसे जैसे ये डिवाइड करेगा, वो वैसे वैसे नीचे भी आता रहेगा साथ के साथ. ठीक है, इस लाइक इट इज डिवाइडिंग एज वेल एज इट इज मूविंग ऑल्सो. किस तरफ मूव करेगा? टूवर्ड्स द यूटेरस. क्लियर है? So uterus is an inverted pear shaped structure as you can see over here. Now it comes over here. After it reaches the uterus, यहाँ पे एक और important process होता है जिसको हम बोलते हैं implantation. Implantation. और ये कब होता है? When this zygote becomes a 32 cell stage. और इसको बोला जाता है blastocyst. क्लियर है?
जब ये जाइगोट डिवाइड होके एक से दो, दो से चार ऐसे करके जब 32 सेल का बन गया, दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अर्ली एम्ब्रियो। एंड इसका क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन मीन्स इट एम्बेडेड इनटू द वॉल ऑफ यूटरस। क्लियर है? नाउ जब इट व्हेन इट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूटरस, जब एम्बेडमेंट हो गया, पूरा इम्प्लांटेशन हो गया, नाउ it will absorb the nutritions from that uterus only. Okay, it will grow and it will develop into a baby. Okay, I hope it is clear to all of you. So let's see the process of fertilization with the help of a small video. During ejaculation, nearly 300 million sperms move from the testes through the tubes called the vas deferens into the area of the prostate. At this point, the prostate contracts, closing off the opening between the bladder and the urethra, releasing fluid into the urethra and pushing semen on through. The seminal forms a thick fluid that is alkaline in order to protect sperm from the acidic environment of the female vagina. The gel is liquefied by enzymes from the prostate gland. It also contains sugars to nourish the sperm. The seminal plasma is left in the vagina. Sperm use their tails to swim through the layers of cervical mucus that guard the entrance to the uterus. During ovulation, this barrier becomes thinner and changes its acidity, creating a friendlier environment for the sperm. On the other side, after releasing the egg, at about day 14 of the period, the egg arrives at a specific portion of the tube called the ampular isthmic junction. It rests for another 30 hours. Fertilization occurs in this portion of the tube. Once the sperm has entered the uterus, contractions propel the sperm upward into the fallopian tubes. To meet the waiting egg, sperm must travel from the vagina to the fallopian tubes, a tough journey that few sperm survive. This process may be nature's way of allowing only the healthiest sperm to fertilize the egg to provide the best chances of having a healthy baby. The first sperm enter the tubes a few minutes after ejaculation. But, however, the first sperm are not likely to fertilize the egg. Motile sperm can survive in the female reproductive tract for up to 5 days. The magic happens in the fallopian tubes. The fallopian tube pushes the egg towards the uterus. Cilia push the sperm towards the egg. Also, the surrounding cells of the egg produce a chemical that attracts sperm. The sperm first burrow through the cells of the corona radiata. Then, upon contact with the zona pellucida, the sperm bind to the receptors in the zona pellucida. Then, the enzyme-filled cap of the sperm, called the acrosome, releases its stored digestive enzymes. Finally, the sperm must fuse with the egg plasma membrane. This event causes the egg membrane to change and prevent other sperm from attaching to it. Now attached, the sperm's nucleus, where the chromosomes are stored, enters the egg cell, looking for the egg's nucleus. Egg combines genetic material with the sperm to create a full set of chromosomal DNA with 23 pairs of chromosomes that contain a unique copy of half the genes of the parent source. This is the blueprint for a whole new unique person. All right, so that is a nice video. So I hope you have understood this, how the fertilization is happening. राइट, सो स्पर्म के पास होते हैं 23 क्रोमोसोम्स, ओवम के पास 23 क्रोमोसोम्स, नाउ द बेबी के पास कितने आ गए, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें, इसका अगर थोड़ा डिटेल में जाए, स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. ठीक है, यहाँ पे ये हेड है,
एक मिडिल पीस है एंड देन टेल होता है. ओके, दिस इज द हेड. हेड कंटेन्स द डीएनए और द सॉरी द क्रोमोसोम्स, जो जेनेटिक मटेरियल जो भी है. ठीक है, सो जेनेटिक मटेरियल जो है वो कहाँ पे होगा? हेड में होगा. ऑलराइट, 23 क्रोमोसोम्स कहाँ पे होंगे? हेड में. मिडल पीस, दिस इज द मिड पीस. This contains mitochondria. Mitochondria is producing ATP energy, which is required for the movement of the sperm. Okay, and this is the tail. Tail is helping in movement. ठीक है, movement में help करता है tail. So this is about the fertilization. All right, millions of sperms are released, produced, but only one sperm is fertilizing with the ovum. Okay. So let's discuss some important terms. First important term हमने पढ़ा क्या? Spermatogenesis. This is the process in which male germ cells called the spermatogonia or it is developing into the mature sperm cells. Okay. तो basically the production of sperms is called as the spermatogenesis. कहाँ पे होता है? Testes में होता है ये. ठीक है. Next process हमने पढ़ा insemination. Insemination is the process in which sperm is introduced into the vagina. That process is called as insemination process. Okay, oogenesis हमने पढ़ा डिस्कस किया. Oogenesis is the process in which female gametes are produced in the ovaries. ठीक है, ovum is produced in the ovaries. Ovulation, next important process. It is the process in which the ovum or the mature eggs, these are released from the ovary into the fallopian tube. That is the process of ovulation. Next, we discuss about the implantation process, where we have discussed about that. It is the process where the zygote is attached to the uterus. Okay, that process is called as implantation process. I hope it is clear. चलो, एक बार हम देख लेते हैं कि स्पर्म की जर्नी कैसी रही. ठीक है, स्पर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ कहाँ गया. लेट्स सी दिस. तो पूरा फ्लो चार्ट है ये, आप लोग पूरे वर्टिकल वे में ड्रॉ कर सकते हो. मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने ऐसे सर्कल कर दिया. ठीक है, स्क्वायर शेप में कर दिया. सो यू कैन सी टेस्टीज. स्पर्म कहाँ बना था सबसे पहले? टेस्टीज में बना था, है ना. टेस्टीज से इसकी जर्नी होती है शुरू. ऑलराइट, उसके बाद ये पहुंचा एपिडाइडमिस में. ठीक है, इट रीचेस द एपिडाइडमिस. राइट, एपिडाइडर्मिस में इट वाज स्टोर्ड फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, फिर जाता है वास्ट डिफरेंस. देन इट इज मूविंग थ्रू द इजैक्यूलेटरी डक्ट. फिर गया यूरेथ्रा और यूरेथ्रा से बाहर आ जाता है. कहाँ पे गया? वेजाइना में. ठीक है. सो बाय एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन प्रोसेस. टेस्टिस में क्या हुआ था? टेस्टिस में हुआ था स्पर्मेटोजेनेसिस. ऑल राइट. ओके, नाउ वन मोर थिंग ओवर हियर, दैट स्पर्म जरूरी तो नहीं ना कि हमेशा इजैक्यूलेट आउट हो, है ना. इट्स नॉट नेसेसरी. तो उस टाइम पे क्या होगा? इट it remains in the epididymis for 20 to 25 days and after that it will degenerate over there only. ठीक है, वो अपने आप degenerate हो जाता है and उसके बाद फिर से न्यू sperm प्रोड्यूस होता है. क्लियर. फिर ये इंसेमिनेशन के बाद आया वेजाइना पे. फिर सर्विक्स से होते हुए कहाँ पहुंच गया? फैलोपियन ट्यूब में. यहाँ पे होता है क्या? फर्स्ट ओव्यूलेशन हुआ एंड देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. Okay, after the fertilization zygote is produced, which is the one cell. Okay, it is dividing into 2 to 4, 4 to 16, 16 to 32 cell, that is the blastocyst stage. Okay, this stage is also called as early embryo. Early embryo. और इसका क्या हो गया? इम्प्लांटेशन हो गया. कहाँ पे? यूटरस में. क्लियर. ना यूटरस में इम्प्लांटेशन होने के बाद अब ये इट विल एब्सॉर्ब द न्यूट्रिशंस फ्रॉम द मदर्स बॉडी. यूटरस इज आल्सो कॉल्ड एज वुम्ब, है ना. वुम्ब, बच्चेदानी. ठीक है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो विल बिगिन ओवर हियर. ओके, तो सबसे पहले ऑर्गन्स डेवलप होते हैं. ऑल राइट, दैट वी कॉल इट एज एम्ब्रियो. उसके बाद एम्ब्रायोनिक स्टेज, जब ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं. फिर जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो लिम्स डेवलप होते हैं, दैट इज द फीटस. ठीक है, तो एम्ब्रियो एंड फीटस में डिफरेंस पता होना चाहिए. ठीक है. ठीक है, पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज आता है, उसके बाद आता है फीटल स्टेज, एंड जब फाइनली फुली ग्रोन बेबी हो जाता है, दैट इज द बेबी.
क्लियर है? तो इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? 9 मंथ का प्रोसेस लगता है। एंड दिस प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक, जो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज gestation पीरियड। ऑल राइट, gestation पीरियड। सो दिस इज द वेरी लॉन्ग जर्नी ऑफ स्पर्म, है ना, यहाँ से टेस्टिस से स्टार्ट होके फैलोपियन ट्यूब तक, दिस इज द जर्नी ऑफ द स्पर्म। ठीक है, और उसके बाद से ये पूरा प्रोसेस हो रहा है फीमेल की बॉडी में। आई होप इट इज क्लियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या क्या स्टेजेस आते हैं, कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है, कैसे ये डेवलप होता है। ठीक है, सो प्लीज डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। एंड अभी तक अगर आप लोगों ने देख लिया है और अच्छा लग रहा है, सो हिट द लाइक बटन एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन।